मैम कोड लाइक कोलेटरल लिगामेंट और फैन लाइक जो है ये दोबारा बता दो प्लीज। आपके जो कोलैटरल लिगामेंट है ना उसके ये डिफरेंट पार्ट्स हैं. These are the two different parts of the cord like और fan like. यस मैम, हाउ वी आइडेंटिफाई देम? जो आप इसमें डायग्राम में आपको पीछे दिखाया ना जो फैन लाइक हो रहे हैं, ये देखें जो स्पैन कर रहे हैं यहाँ से, दिस इज दी फैन लाइक पोर्शन. और जो आपके पास कॉर्ड लाइक है विच इज मूविंग टुवर्ड द स्पेशली टुवर्ड द वेंट्रल सरफेस टुवर्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द tubercle which is present over here, this is cord like. It is Okay, moving ma'am. like a cord and this is fanning out. Okay, मैम रिपीट कर दें. यस मैम, इट्स क्लियर नाउ। कोलैटरल लिगामेंट है, ग्रेज उसको एज सच डिस्क्राइब करती है कि वो आपके पास यहाँ टुबर्कल होता है नियर टू द हेड ऑफ द मेटाकार्पल. फ्रॉम हियर द लिगामेंट passes downward and interiorly toward the base ventral surface of the base of the proximal filament. ओके, और जो KLM है वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है कि इट हैविंग टू पार्ट, वन इज लाइक कॉर्ड लाइक पार्ट एंड अदर वन इज अ फैन लाइक पार्ट. तो जो फैन आउट हो रहा है दिस इज फैन लाइक पार्ट. बोथ आर कमिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. ओके, both coming from the tubercle here, and this specially it is going to cover, there is a depression adjacent to this tubercle and they all moving toward the ventral surface of the base of the proximal filament. ठीक है जी? यस मैम। मेंबर सेंड कर दो. Now come to the last joint which मेंबर्स is कर दो, ज्यादा मेंबर्स कर दो. बेटे यही तो important joint है, अगर आप खुद पढ़ लेंगे तो it's up to you. नो मैम, नो मैम, आप सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आपकी समातों को ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी मैं. ठीक है, जो सो रहे हैं वो सोते रहें, जो जाग रहे हैं वो सुन लें. ओके जी, नाउ द लास्ट जॉइंट इज द कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट. जी बेटे, जी बोले डॉक्टर साहब. आपका नेट इशू है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना मेरे बेटे. अटेंडेंस हो जाएगी आप बेटे, वरी फॉर द अटेंडेंस. अभी थोड़ी देर में मैं आपकी डाउनलोड कर लूंगी अटेंडेंस. ओके, अगर आप बाकी क्लास ले रहे हैं और आप अपने किसी फ्रेंड के थ्रू हमें ये मैसेज कन्वे करा देंगे कि यू वर द पार्ट ऑफ दिस क्लास, तो वो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस. कि मेरा नेट इशू हो गया है अटेंडेंस. ओके बेटे, अटेंडेंस की बात कर रही हूँ. ओके, कल की आप बता दीजिएगा डॉक्टर गुलाब शाह को, वो डेफिनेटली आपकी लगा देंगी. आप अपने सीआर को इन्फॉर्म कर दो. ठीक है, नाउ कम टू द जॉइंट व्हिच इज कॉल्ड द कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, और दिस इज द फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, एंड द फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इज बिटवीन द कार्पल बोन एंड द first metacarpal of the thumb. Okay, over here, and this bone which is present over here, this is called the trapezium, and this part, this trapezium, it's receiving the base of the first metacarpal. So when they both articulate together, they are going to form a joint which is called the first carpometacarpal. So this is the, which type of joint is this? This is a saddle shaped synovial joint. Why we call it saddle? Because here the surfaces are concavo-convex reciprocally. ठीक है, एक surface concave और दूसरी convex है, which come in contact with each other to form a saddle shaped joint, or otherwise it resemble a saddle of the horseback. That's why we call it a saddle shaped joint, or saddle type of synovial joint. The articular surfaces which come in contact, the base of the first metacarpal and the articulating surface of the trapezium bone, they are going to articulate. Now the fibrous capsule, it is going to cover the articular margin of these two bones. Okay, now inside the fibrous capsule you have the lining of the synovial membrane. This is a separate joint. मैम जी मैम हम इसे सैडल टाइप कह रहे हैं, आपने कहा कि ना इसमें कनकेविटी और कन्वेक्सिटी दोनों है, तो कहाँ कन्वेक्सिटी शो हो रही है और कहाँ कनकेविटी? आपके जो बेस ऑफ द मेटाकार्पल है ना बेटे, उसमें आपके पास स्लाइट कनकेविटी होती है. ओके, तो वो उसके साथ जब कांटेक्ट में आता है, जो आपके पास ट्रेपेजियम है, तो दे मेकिंग इन कांटेक्ट विद कनकेवो कॉन्वेक्स सरफेस. मैम यानी कार्पल जो होगा वो कन्वेक्स शेप होगी उसकी, और जो मेटाकार्पल की कनकेविटी जो उसकी आर्टिकुलर सरफेस है. ओके मैम. वो फिर उसके बाद आ जाए बेटे फाइब्रस कैप्सूल के बाद साइनोवियल मेम्ब्रेन है व्हिच लाइन इनसाइड द फाइब्रस कैप्सूल. नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस जॉइंट विद नंबर ऑफ लिगामेंट्स. वो लिगामेंट्स कौन से हैं? लैटरल लिगामेंट इज देयर,
saddle shape or saddle joint है between the base of the first metacarpal and the trapezium. Fibrous capsule is here. You can see in this picture, and the ligaments are there. Ligaments कौन से हैं? Lateral, anterior, and the posterior ligament. Okay, lateral, anterior, and the posterior ligament. So these are the different ligaments. Lateral ligament is also labeled as a dorso-radial ligament. This is the dorso-radial ligament, which is called the lateral ligament. Other ligaments are called the interior molar ligament, उसको कह लें, या आप interior palmar ligament कह लें. दूसरा ligament आपके पास posterior oblique ligament. Why we are using oblique for both these ligaments? Because they are obliquely placed. The interior one as well as the posterior one. They both are present in oblique manner. So the other one is the dorso-radial ligament. The dorso-radial ligament is a broad band running from the lateral surface of the trapezium. It's running from the lateral surface of the trapezium and moving toward the radial side of the base of the first metacarpal. Okay? So this is the attachment of the lateral ligament. The other name using for the lateral ligament is the dorso-radial ligament. Coming from the lateral side of the trapezium, moving toward the radial side of the base of the first metacarpal. Now come to the other ligament which are present over here. They are the palmar and the dorsal ligament. These both palmar and the dorsal ligament, they are present in oblique manner. Okay, from where they are coming? They are coming from the trapezium and moving toward the ulnar side of the first metacarpal on the dorsal aspect, ulnar side of the first metacarpal on the palmar aspect. They both are converging toward it. ठीक है? आपके पास palmar side पे आपके आएगा interior molar ligament or the palmar ligament, or on the dorsal surface you have the posterior or the dorsal ligament of the first carpometacarpal. They both are present in oblique manner and moving toward the ulnar side of the first metacarpal, basis of the first metacarpal. So these are the three ligaments which are going to attach with the first carpometacarpal joint. After that, now come to the movement of the thumb. They are very important. Okay. First you have the flexion of the thumb. Then you have the extension of the thumb. You have the abduction of the thumb and adduction of the thumb. Okay. After that, there is the opposition and the reposition. Normal position pe chala gaya. Along with this, also circumadduction. Okay. When you completely rotating your thumb, this is called the circumadduction. So, in flexion and abduction, the plane of the movement is very important. As you can see, in case of flexion, the plane of the palm and the plane of the movement of the thumb are at parallel with each other. Okay, this is the plane of the palm and this is the flexion of the thumb. Both the planes, they are parallel to each other. But in case of the abduction and adduction, the plane of the palm is over here and the plane of the thumb, it making a right angle with it. 90 degree का angle बना रहे हैं ना इसके साथ palm के साथ, ठीक है? The plane of the movement in case of abduction and adduction is different as well as in case of flexion and extension. In case of flexion and extension, the plane of the movement of the thumb is parallel to the plane of the palm. In case of, sorry, doctor. Have you any query, Doctor साहब? मैम शायद उनका नेट का इशू है. कोई बात नहीं मेरे बेटे, उसका नेट का इशू है तो वो बता देगी, उसकी अटेंडेंस लग जाएगी. मामला तो अटेंडेंस का है ना, वो हो जाएगी. तुम लोग आके भी बताओगे ना हमें कि हमने क्लास ली थी, तो हम यकीन करेंगे तुम्हारा. ठीक है, अब इतने बुरे दिन तो नहीं ना आए कि तुम लोग पे हम यकीन ही ना करें. ओके, फ्लेक्शन and extension, they are taking place in the plane of the thumb is parallel to the plane of the palm. The plane of the movement is parallel to the plane of the palm. In case of abduction and adduction, the plane of the movement is at right angle to the plane of the palm. Okay, this is the flexion when you are turning your thumb and taking it towards your palm. Okay, this is the flexion. When the reverse position is there, this is called the extension. Okay. When your thumb is at right angle, 90 degree angle, this is the abduction. When you are taking this thumb toward the lateral side of the index finger, this is called the adduction. So this is the adduction, this is the abduction, this is the flexion, this is the extension. Now come to the opposition. When the pulp of the thumb is going to touch the pulp of the little finger as well as the ring,
middle and the index finger. This is called